Hello friends, welcome to you in Academic Gyan Ganga. Today we are studying about solar thermal energy. So first question, direct solar energy is used for option A water heating, option B drying, option C distillation and option D all of the above. So इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हम डायरेक्ट सोलर एनर्जी का यूज वाटर हीटिंग में करते हैं, ड्राइंग में एंड यूटिलाइजेशन में करते हैं। Question 2. Day length in hours is calculated by। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, where phi is equal to latitude angle and beta is equal to slope angle. Question 3. Which is advantages of solar thermal energy? Option A, it is reusable source of energy. Option B, easily and abundantly available. Option C, eco-friendly, that is pollution free, and option D, all of the above. तो आंसर हो जाएगा all of the above. Fourth question, how many types of solar radiation? Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. तो इसका आंसर हो जाएगा 2. There are two types of solar radiation, that is extraterrestrial solar radiation and terrestrial solar radiation. Fifth question, solar radiation received on the earth's surface without changing direction is known as। option A diffuse radiation, option B beam radiation, option C total radiation and option D none of these। तो आपका आंसर हो जाएगा बीम रेडिएशन। बीम रेडिएशन को हम लोग डायरेक्ट रेडिएशन भी कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस नोन एज। आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इरेडियंस। सेवेंथ क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम रेडिएशन and the normal to a plane surface is known as। option A declination angle, option B latitude angle, option D incident angle and option D none of these। तो आपका आंसर हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। एट्थ क्वेश्चन, हावर एंगल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओमेगा इज इक्वल टू 15 into LSD minus 12, where LSD is local solar time। Ninth question, which devices are used for measuring the solar radiation? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द above devices we used measuring solar radiation। 10th question, pyrometer consists of following components। option A black surface, option B thermopile, option C glass dome and option D all of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द above। 11th question, the power from the sun intercepted by the earth is approximately। option A 1.8 into 10 to power 11 megawatt, option B 2.8 into 10 to power 11 megawatt, option C 1.8 into 10 to power 15 megawatt, option D 2.8 into 10 to power 15 megawatt। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.8 into 10 to power 11 मेगावाट।